Fill in the blanks. Mahir Ali. Dawn Editorial. Published on December 7, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. A repressive regime organizes a managed election. It is taken aback when the polling stations stay empty. Then, at exactly 4 p.m., voters pour out of their homes. Voting times are extended to accommodate the rush. The regime is relieved until officials start tallying the votes. It turns out that 70% of the ballot papers are blank. That's the stage-setting premise of Portuguese Nobel laureate José Saramago's superb 2004 satirical novel Seeing. I was reminded of it by the recent demonstrations in China, where some of the protesters held up blank pieces of paper. They were inspired by a tactic deployed in Hong Kong a couple of years ago, but some of them traced its provenance to a Soviet-era joke about a man who was taken into custody for handing out blank leaflets in a public square. When he protests his innocence, he is informed, "We all know what you meant to say." The latest wave of public expressions of dissent, not huge by any means, but still fairly widespread, its scale unprecedented during Xi Jinping's decade in power, was triggered by a tragedy. The death of 10 people in a fire in high-rise residential block in Urumqi, the lockdown capital of Xinjiang, was attributed to escape routes being blocked and firefighters being delayed by COVID-19 restrictions. Such restrictions are a thing of the past almost everywhere else in the world. By many criteria, China's COVID-0 strategy could hardly be adjudged a failure. Given its population, the number of fatalities has been relatively tiny, 1/100th of the death toll in India, for instance. And China's initial response to the virus was impressive, as makeshift hospitals sprang up in Wuhan, and the state efficiently met the basic needs of families in lockdown. China was also the first major country to relax restrictions. There's more to the anger in China than COVID rules. But its subsequent strategy of clamping down hard whenever even a single infection was detected has backfired. The Omicron variant, it could be argued, has outwitted the authorities. The Shanghai lockdown earlier this year was an overkill, with many residents complaining of starvation. More than 500 million people are estimated to have been in lockdown in late November. And the obligation to provide fresh evidence of testing negative each time you access public transport or enter a supermarket was absurd. Some of the more onerous restrictions have lately been relaxed, albeit in a haphazard manner. Suddenly abandoning COVID-0 could potentially unleash a wave of infections and deaths. China has thus far rejected the idea of importing Western mRNA vaccines from the West, and vaccination levels among the elderly are anyhow unsatisfactory. In the Chinese popular imagination, all recent policies are directly associated with Uncle Xi, portrayed in the official media as the font of all wisdom. There are plenty of hints that the pent-up fury of at least some of those who have mustered the courage to protest in public goes far deeper than COVID-related frustrations. The economic downturn of recent years, related largely but not wholly to the pandemic, has thrown tens of millions out of work or clouded their prospects of prosperity. China's post-Mao social contract entailed participating in the opportunities opened up by an economic renaissance while accepting the limits of political freedom. The Tiananmen Square massacre of 1989 spelt out how the latter might be enforced. The restrictions on political and social discourse were nonetheless more lax until she stepped in. The tolerance of dissent has declined in the past decade. Small wonder that the demise last week of Jiang Zemin, the post-Tiananmen Communist Party leader, provided some scope on Chinese social media for nostalgia combined with indirect criticism of the incumbent leader. That feeds into the mounting evidence that there's much more to the public frustration than COVID-related restrictions, which includes occasional slogans directly aimed at the leader. The most notable, of course, was the banner unfurled by a brave soul on a Beijing bridge on the eve of the 20th Party Congress in October, which extended Xi's term.
It read, "We want to eat, not do coronavirus tests, reform, not the Cultural Revolution. We want freedom, not lockdowns, elections, not rulers. We want dignity, not lies. Be citizens, not enslaved people." Such sentiments would no doubt be echoed if the ubiquitous sheets of paper weren't blank. Many of the protesters might be placated by reopening measures, but there are deeper resentments bubbling under the surface. There is almost certainly no immediate threat to the regime, but its carrot-and-stick response to the sporadic unrest indicates a realization that excessive repression could backfire. Meanwhile, more than one report cites an instance of a man in Beijing warning protesters against foreign influences, spontaneously eliciting a mocking retort, "Do you mean Marx and Engels? Is it Stalin? Is it Lenin?" Published in Dawn, December 7, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. एक जाबिराना हुकूमत मुनज़्ज़म इंतखाबात का एहतमाम करती है। जब पोलिंग स्टेशन खाली रहते हैं तो हैरत होती है। इसके बाद ठीक 4 बजे राय दहिंदगान अपने घरों से बाहर निकलती है। रश को एडजस्ट करने के लिए वोटिंग के औकात में तोसी की जाती है। हुकूमत को इस वक्त तक राहत मिलती है जब तक कि हुक्काम वोटों की गिनती शुरू नहीं कर देते। ये पता चलता है कि 70% बेल्ट पेपर्स खाली हैं। ये पुर्तगाली नोबल इनाम याफ्ता जूस सारामुगो के 2004 के शानदार तंजिया नावल सनम का स्टेज सेटिंग बुनियाद है। मुझे ये बात चीन में होने वाले हालिया मुजाहिरों से याद आई, जहां कुछ मुजाहिरीन ने कागज के खाली टुकड़े उठा रखे थे। वो चंद साल कबल हांगकांग में तैनात एक हरबे से मुतासिर हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ ने सोवियत दौर के एक मजाक में इसकी असलियत का सुराग लगाया, जिसमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया था जिसे एक अवामी चौक में खाली पर्चे देने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। जब वो अपनी बेगुनाही पर एहतजाज करता है तो उसे बताया जाता है, "हम सब जानते हैं कि आपका क्या कहना था।" इख्तिलाफ राय के अवामी इजहार की ताज़ा तरीन लहर किसी भी तरह से बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी वसी है। इसका पैमाना शी जिनपिंग के इक़्तिदार में एक दहाई के दौरान बेमिसाल है। एक अलमिया से शुरू हुआ था। सिंकियान के लॉकडाउन दारुल हुकूमत अरोमची में बुलंद उबाला रिहायशी ब्लॉक में आग लगने से 10 अफराद की हलाकत की वजह फरार के रास्तों को बंद करना और कोविड-19 पाबंदियों की वजह से फायर फाइटर्स की ताख़ीर है। इस तरह की पाबंदियां दुनिया में तकरीबन हर जगह माजी की बात हैं। बहुत से मेयारात के मुताबिक चीन की कोविड-0 हिकमत अमली को शायद ही नाकामी करार दिया जा सके। इसकी आबादी को देखते हुए अमवात की तादाद निस्बतन कम रही है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद का 100वां हिस्सा। और वायरस के खिलाफ चीन का इब्तिदाई रद्द-ए-अमल मुतासिर कुन था, क्योंकि वुहान में आर्जी अस्पतालों का आगाज हुआ और रियासत ने लॉकडाउन में खानदानों की बुनियादी ज़रूरियात को मौसर तरीके से पूरा किया। चीन पाबंदियों में नरमी करने वाला पहला बड़ा मुल्क भी था। चीन में कोविड कवानीन के मुकाबले में गुस्से में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जब भी एक भी इन्फेक्शन का पता चलता है तो उसकी बाद की हिकमत अमली को सख्ती से दबाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई है। ये दलील दी जा सकती है कि ओमिक्रॉन औरनक ने हुक्काम को पीछे छोड़ दिया है। इस साल के अवाइल में शंघाई में लॉकडाउन एक हद से ज्यादा था, जिसमें बहुत से रिहायशियों ने फाका कशी की शिकायत की थी। एक अंदाजे के मुताबिक नवंबर के अवाखिर में 5 अरब से जायद अफराद लॉकडाउन में रहे हैं। और हर बार जब आप अवामी नकलो हमल तक रसाई हासिल करते हैं या सुपर मार्केट में दाखिल होते हैं तो मनफी जांच के ताज़ा सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी मुज़हका खेज थी। कुछ ज्यादा सख्त पाबंदियों में हाल ही में नरमी की गई है, अगरचे बेतरतीब अंदाज में। अचानक कोविड-0 को तर्क करने से मुमकिना तौर पर इन्फेक्शन और अमवात की लहर पैदा हो सकती है। चीन ने अब तक मगरिब से मगरिबी mRNA वैक्सीन दरामद करने के ख्याल को मुस्तरद कर दिया है और बुजुर्गों में वैक्सीनेशन की सतह किसी भी तरह गैर तसल्ली बख्श है। चीनी मकबूल तखय्युल में तमाम हालिया पॉलिसियों को बराह रास्त अनकलशिया के साथ मुंसलिक किया जाता है, जिसे सरकारी मीडिया में तमाम हिकमत के फ़ॉन्ट के तौर पर पेश किया जाता है।
इस बात के बहुत से इशारे हैं कि अवामी सतह पर एहतजाज करने की जुर्रत करने वालों में से कम अज कम कुछ लोगों का गुस्सा कोविड से मुताल्लिक मायूसियों से कहीं ज्यादा गहरा है। हालिया बरसों की माशी बदहाली, जिसका ताल्लुक बड़ी हद तक वबाई मर्ज से है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं, ने लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया है या उनकी खुशहाली के इम्कानात को धुंधला दिया है। माओ के बाद चीन के समाजी मुआहदे में सियासी आज़ादी की हुदूद को कबूल करते हुए माशी निशत सानिया के जरिए खोले गए मौके में हिस्सा लेना शामिल था। 1989 के तियानमन स्क्वायर कत्ल आम ने वाज़े किया कि मुअख्खर ज़िक्र को किस तरह नाफिज किया जा सकता है। सियासी और समाजी गुफ्तगू पर पाबंदियां इस वक्त तक ज्यादा ढीली थी जब तक कि शी ने कदम नहीं उठाया। गुज़िश्ता एक दहाई में इख्तिलाफ राय की रवादारी में कमी आई है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तियाननमन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा जियांग ज़ीमन के गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल ने चीनी सोशल मीडिया पर पुरानी यादों के लिए कुछ गुंजाइश फराहम की और मौजूदा रहनुमा पर बिलवास्ता तनखीद भी की। इससे इस बात के बढ़ते हुए शवाहिद मिलते हैं कि कोविड से मुताल्लिक पाबंदियों के मुकाबले में अवाम की मायूसी में और भी बहुत कुछ है, जिसमें कभी कभार ऐसे नारे भी शामिल होते हैं जिनका बराह रास्त मकसद रहनुमा को निशाना बनाना होता है। यकीनन सबसे काबिल जिक्र बैनर अक्टूबर में 20 पार्टी कांग्रेस के मौके पर बीजिंग के एक पुल पर एक बहादुर रूह की तरफ से लहराया गया था, जिसने शी की मुद्दत में तौसी की थी। इसमें लिखा था, हम खाना चाहते हैं, कोरोना वायरस के टेस्ट नहीं करना चाहते। इस्लाह सकाफती इनकलाब नहीं। हम आज़ादी चाहते हैं, लॉकडाउन नहीं। इंतखाबात हुक्मरान नहीं। हम इज्जत चाहते हैं, झूठ नहीं। शहरी बनूं, गुलाम लोग न बनूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के जज्बात की बाज़गश्त सुनाई देगी अगर कागज की हर जगह की चादरें खाली ना हों। बहुत से मुजाहिरीन को दोबारा खोलने के इक़दामात के जरिया मुतमईन किया जा सकता है, लेकिन सतह के नीचे गहरी नाराजगियां बुलबुला रही है। यकीनी तौर पर हुकूमत को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बदअमनी पर उसका गाजर और छुरी का रद्द अमल इस एहसास की निशानदेही करता है कि हद से ज्यादा जब उल्टा असर डाल सकता है। दरियासना एक से ज्यादा रिपोर्टों में बीजिंग में एक शख्स की मिसाल का हवाला दिया गया है जिसने मुजाहिरीन को गैर मुल्की असरात के खिलाफ मुतनब्बे किया था, जिसने खुद ब खुद एक मुज़हका खेज जवाब दिया, क्या आपका मतलब मार्क्स और एंगल्स से है? क्या ये स्टालिन है? क्या ये लीनिन है? डान अखबार में शाये शुदा 7 दिसंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.